Hello students, the question is two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the distance, half the height. The equilibrium separation between the balls now become option A 2r by root 3, option B 2r by 3, option C 1 by root 2 whole square, and option D r upon cube root of 2. So the problem is based on the topic Coulomb's law and the basic application of mechanics. Some basic rules of mechanics are used here. So this is the situation, first situation in which the height, this particular height is y and the distance between them is r. The distance between them is due to the repulsive force, the repulsive Coulomb force, because the charges are equal. That's why they start repelling each other. And this string is taut, so there is a tension in these strings. Now in the second situation, these are clamped, these strings are clamped at half the height, so it means that this y becomes now y by 2. So when this y changes, then what is the new distance between them in terms of the earlier distance? That's the basic problem. So to solve this particular problem, first of all, we have to check the forces. We have to check the forces acting on a particular ball. For example, we take this ball and write down the different forces, show the different forces. So the force mg, which is the weight, acts downwards. This is the gravitation force which is acting downwards. The tension is T in this string, suppose, and this angle is theta. Let us call this angle as theta. Then for this particular situation, we can draw the free body diagram. We can draw the free body diagram here. So this is a particular ball, a downward force mg acting downwards. So there is a force which is acting downward, which is a gravitation force. This is the tension T. This angle is theta. So the component of this T along this direction will become T cos theta. And this upward component of this T, which is 90 degree with cos theta, is T sin theta. This is T sin theta. So this is equilibrium position. So it means that T sin theta is balancing mg. So we can write it here, T sin theta is equal to mg. This is our first equation. And the repulsive force between them, the Coulomb force, is F, and F is given by 1 upon 4 pi epsilon naught. We can call it as K in place of 1 upon 4 pi epsilon naught. In short, we can write K. So this is K times the charge square upon the distance square. So this is the force of repulsion between them, and this is balanced by T cos theta component. So this is equal to T cos theta. This is our, and we can write it down in this manner, that T cos theta equals to kq square upon r square. So this is our equation number 2. Now we have to eliminate this T here. So to eliminate this T, we have to divide these two equations. When we divide these two equations, the left hand side by the left hand side and the right hand side by the right hand side, so we get T cancels and we get tan theta is equal to mg upon kq square upon r square. So this becomes mg r square upon kq square. Now from trigonometry we know that tan theta is equal to y upon this distance. This distance, for example, we call this point as A, we call this point as B, and call this point as M. So AM distance is r by 2. So tan theta is equal to y upon r by 2. So in place of tan theta, we can write y upon r by 2, because we have to relate the y with r. We have to relate y with r. So we have to eliminate this tan theta. So in place of tan theta, we write y upon r by 2. So y upon r by 2 becomes mg r square upon kq square. Now this value becomes, we can write it down as r ki power 3
Cross multiplying it, we get r की power 3, r to the power 3 is equal to, this value is equal to k q square, 2k q square upon mg, and y is also here, kq square y upon 2kq square y upon mg. So this value becomes 2kq square y by mg. Or we can see that easily here that these terms are constant, 2kq square mg, these are constant. So in this way we can say that r to the power 3 is directly proportional to y, or we can say that r is directly proportional to y to the power 1 by 3. So in the first case the distances are, so we can say that this r is some constant, suppose k dash times y to the power 1 by 3. Then if this height becomes y by 2, so r dash will be equal to k dash times y by 2 the whole power 1 by 3. So we call this as equation number 3 and this as equation number 4. Now 4 divided by 3, we get r dash upon r as equal to, this value becomes equal to 1 upon 2 to the power 1 by 3. Or we can say that r dash is equal to r upon 2 to the power 1 by 3, or we can write it down in this manner, the cube root of 2, r upon cube root of 2. So option D is correct here. So यहाँ एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है दो पिथ बॉल हैं, सेम चार्ज की हैं, सेम लेंथ की स्ट्रिंग से उनको सस्पेंड किया गया है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करती हैं, आर डिस्टेंस मेंटेन करती हैं, एक हाइट अगर हम देखें परपेंडिकुलर हाइट देखें तो ये हाइट y है। अगर इनको क्लैम्प किया जाए हाफ द हाइट पे, यानी स्ट्रिंग को जो है इस तरह से हाफ द हाइट पे क्लैम्प कर दिया जाए, तब उस सिचुएशन में, न्यू सिचुएशन में आर डैश क्या होगा, यानी इन दोनों बॉल्स के बीच की जो नई डिस्टेंस है वो क्या होगी, ये प्रॉब्लम हमसे पूछी गई है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कूलम्स लॉ यूज़ करना होगा, साथ के साथ हमें मैकेनिक्स के बेसिक रूल्स जो है यूज़ करने पड़ेंगे, बैलेंस ऑफ फोर्सेस को जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, दोनों ही बॉल्स के लिए हम किसी भी एक पर्टिकुलर बॉल को लेते हुए जो है फोर्सेस शो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बॉलें सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। तो अगर हम किसी भी एक के लिए हम फोर्स शो करते हैं तो वो दूसरी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ हम अगर फोर्स, टेंशन फोर्स को T मानते हैं और इस पोजीशन पे एंगल को अगर थीटा मानते हैं, तो हम देख सकते हैं साफ साफ कि mg जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। इस T के जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि होगा T cos थीटा, एक कंपोनेंट T sin थीटा फॉरवर्ड होगा, इसका T sin थीटा बैलेंस करेगा mg को, T cos थीटा बैलेंस करेगा रिपल्सिव फोर्स को। दोनों इक्वेशंस लिखी हमने साथ के साथ, और उसके बाद हमने T को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड किया फर्स्ट को सेकंड से। तो इस तरह से tan थीटा हमें मिला mg r स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर। ज्योमेट्री से या ट्रिग्नोमेट्री से हम देख सकते हैं tan थीटा बराबर होगा y अपॉन r बाई 2, वो वैल्यू हमने पुट करी, फिर हमने सीधे सीधे r को रिलेट किया y से, तो यहाँ हमने ये ऑब्टेन किया r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर 1 बाई 3, या हम कह सकते हैं r बराबर सम कांस्टेंट टाइम्स y टू द पावर 1 बाई 3। न्यू सिचुएशन में y घट के y बाई 2 रह जाता है, तो r डैश बराबर हो जाएगा k डैश टाइम्स y बाई 2 की पावर 1 बाई 3। इन इक्वेशंस को रेस्पेक्टिवली हमने 3 और 4 नेम दे दिया। उसके बाद हमने 4 डिवाइड बाई 3 किया, जिससे कि हमारे को एक्सप्रेशन मिला r डैश बराबर r अपॉन 2 टू द पावर 1 बाई 3। ये हमें एक्सप्रेशन मिला जो कि मैच होता है ऑप्शन डी से। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।